हेलो गाइस, वेलकम टू दिस पार्ट 2 वीडियो ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पहले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस किया बेसिक कंसेप्ट अबाउट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ विच इंक्लूडेड उसमें हमने गैस्ट्रिक एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, एसिड सेक्रीशन प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, ऑल द बेसिक concepts which are necessary for this peptic ulcer disease. So is part 2 mein we will discuss about the pathology of peptic ulcer disease. We will discuss about the diagnosis of peptic ulcer disease. We will discuss about the causes, etiology of the peptic ulcer disease and the management of the peptic ulcer disease. So इस वीडियो में हम further peptic ulcer disease के बारे में डिस्कस करेंगे. As in the previous video we have completed the concepts of this disease. So regarding the peptic ulcer disease, as we already described, that it contains two model. It contains two. Encompasses two types of ulcers. Which the first one is gastric ulcer, and the second one is duodenal ulcers. सो इस हमारे में पेप्टिक अल्सर डिजीज में मेजॉरिटी में दो टाइप्स के अल्सर्स आते हैं. द वन इज गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज एंड द अनदर इज ड्यूडेनल अल्सर्स. जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट व्हाट इज अल्सर. अल्सर वी डिस्क्राइब्ड दैट these are breaks in mucosal surfaces that are greater than 5 millimeter in size, and its depth is up to submucosal lining. We should remember this that ulcer को हम define करेंगे. They are mucosal surface में breaks होते हैं which are greater than 5 millimeter and the depth is up to the submucosal linings. So ये तो basic concept था जो कि हमने previously already discuss कर दिया. So इन दोनों टाइप्स के अल्सर्स में या हम कहेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज में वन ऑफ द आपको टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, टू कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो हमें पता होनी चाहिए पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में. और वो दो रिस्क फैक्टर्स कौन है? द फर्स्ट वन इज Helicobacter pylori, which is a bacteria, H. pylori. And the second risk factor for this is non-steroidal anti-inflammatory drugs. These two are the main important risk factors for peptic ulcer disease. Which one? H. pylori and non-steroidal anti-inflammatory drugs. और अगर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे विद duodenal ulcers एज वेल एज गैस्ट्रिक अल्सर्स, तो जो कि duodenal ulcers है, आपको ये तो पता है द बेसिक एनाटमी ऑफ आवर GIT विच एनकम्पासेस स्टोमक. अगर हम ये स्टोमक ले, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द duodenum. इट कंटेन्स पार्ट्स. सो duodenal ulcers, दिस इज द बेसिक एनाटमी. सो duodenal ulcers में क्या आता है? यूजुअली दे ऑकर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum, फर्स्ट पोर्शन ऑफ duodenum. फर्स्ट पार्ट क्या कर, हम एक रफ डायग्राम ले जैसे कि हमने ये बनाया था, जस्ट सिमेटिक, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस वन इज द फर्स्ट, दिस encompasses second part and just a schematic diagram कि ये first part, second part and third part. So basically this one is the first part, this is the second part and this is the third part. तो यहाँ पे duodenal ulcer जो होते हैं, so we have to remember that more than 95% of duodenal ulcer जो होते हैं वो इसी फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. मोर देन 95% of the duodenal ulcers are present in the first part of the duodenum. So इसमें भी in 95% में भी which are present in the first part,
इनमें भी अबाउट 90% आर प्रेजेंट विद इन द फर्स्ट 3 सेंटीमीटर्स ऑफ पाइलोरस, बिकॉज पाइलोरस के बाद ही, हमारे पाइलोरिक पार्ट के बाद ही ड्यूडेनल स्टार होता है। तो आप कहिए कि जस्ट after the pylorus within 3 centimeters are most commonly present, even 90% of those from the first part are present in that area. ये आपको duodenal ulcers के बारे में पता होना चाहिए। और यूजुअली उन अल्सर्स दे कैन बी यूजुअली, दे आर यूजुअली, जो अल्सर्स होते हैं duodenal अल्सर्स, दे आर यूजुअली लेस देन, कॉमनली दीज आर कॉमन फाइंडिंग्स दैट दे आर लेस देन और इक्वल टू 1 centimeter in diameter, or they can reach, occasionally they can sometimes reach up to 3 to 6 centimeters, which are considered as giant ulcers. This is a rare findings, but usually we found that हमारे जो duodenal ulcers हम फाइंड करते हैं वो यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होते हैं, बट समटाइम्स और रेयरली और ओकेजनली दे कैन गो अप टू 3 to 6 centimeters, विच आर देन नोन एज जाइंट अल्सर्स। यूजुअली हमारे जो duodenal अल्सर्स आर, जो duodenal अल्सर्स में मैलिग्नेंसी जो होती है duodenal अल्सर में, दैट इज़ रेयर। इनमें हम मैलिग्नेंसी यूजुअली फाइंड नहीं करते हैं, और जो हमारे मैलिग्नेंसी होती है duodenal अल्सर्स में, दे आर रेयरली फाउंड। बट गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में अब अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक अल्सर्स में अगर हम बात करें, सो गैस्ट्रिक अल्सर्स कैन रिप्रेजेंट, दे हैव हाई चांस ऑफ मैलिग्नेंसी। उसमें तो रेयर था, लेकिन हेयर इट्स, देयर इज एन हाई चांस ऑफ मैलिग्नेंसी इन गैस्ट्रिक अल्सर्स, एज देयर इज एन हाई चांस ऑफ मैलिग्नेंसी। इसीलिए व्हेन वी फाउंड गैस्ट्रिक अल्सर, व्हेन वी फाइंड गैस्ट्रिक अल्सर्स, then the guidelines are that we should do biopsy to check for the malignancy। जब भी हम गैस्ट्रिक अल्सर्स एक पेशेंट में देखें, तब गाइडलाइंस कहते हैं कि वी शुड प्रेफर, वी शुड बायोप्सी, वी शुड डू बायोप्सी इन दैट केस। और द बिनाइन जब गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट, कहाँ पे वो प्रेजेंट फाउंड, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड डिस्टल टू जंक्शन बिटवीन एंट्रम एंड एसिड सेक्रेटरी म्यूकोसा। यू शुड रिमेंबर दिस, इसको हमें याद रखना होगा। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूजुअली जो बिनाइन गैस्ट्रिक, हाँ, जो बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, वो मोस्ट कॉमनली वी फाउंड देम डिस्टल टू द जंक्शन बिटवीन एंट्रम एंड एसिड सेक्रेटरी म्यूकोसा। हमें याद रखना होगा कि जो बिनाइन अल्सर्स है वो रेयर होते हैं, रेयरली फाउंड इन फंडस ऑफ स्टमक। The benign gastric ulcers are rarely found in fundus of stomach. जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट देयर आर 2 मेन रिस्क फैक्टर्स फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीजेस, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज था, इम्पॉर्टेंट एक रिस्क फैक्टर था, विच वाज एच पाइलोरी। सो इसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हाउ एच पाइलोरी एंड एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। सो उसके रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि दैट it accounts for, H pylori accounts for majority of peptic ulcer disease, and we should remember, हमें पता होना चाहिए कि still it is not yet clear how Helicobacter pylori cause ulceration in stomach और duodenum। ये अभी भी क्लियर नहीं है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो जो हमारे स्टमक में होता है वो कैसे अल्सरेशन कॉज करता है इन duodenum। वो इट इज़ स्टिल नॉट
clearly defined yet. और क्या हमें पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि it is the bacteria is named as Campylobacter pyloridis, which is a gram-negative rod-shaped bacteria which is found most commonly in deep portions of mucus gel of gastric mucosa. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो? कहाँ प्रेजेंट होता है? इट्स एन ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है इन द डीप पोर्शन ऑफ द म्यूकस जेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा और इन बिटवीन mucus layer and gastric epithelium. It's an S-shaped bacteria which has a size of approximate 0.5 to 3 micrometer and contains multiple flagella. हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होगी कि द फर्स्ट स्टेप जो कि इन द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन बाय एच पाइलोरी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन किस पे डिपेंडेंट होता है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द बैक्टीरियाज मोटिलिटी and ability to produce urease. ये हमें याद रखना है बिकॉज इट हैज़ एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिएस. दैट्स वाई ये एक डायग्नोस्टिक मार्कर भी होता है. इट इज़ अ डायग्नोस्टिक मार्कर, ये आपको याद रखना है बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ एन डायग्नोस्टिक मार्कर जो कि हेल्प अस इन डिटेक्टिंग द डिजीज़. सो यूरिएस ये प्रेजेंट करते हैं. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द इन्फेक्शन बाय दिस बैक्टीरिया. इट प्रोड्यूस एमोनिया. व्हाट यूरिया डज? यूरिया से क्या होता है? Urease, it produces ammonia from urea. It's an enzyme which catalyzes the reaction by which the ammonia is produced from urea. और इससे क्या होता है? It is an essential step. ये एक स्टेप होता है. It is an important step through it by which there is an alkalinization of surrounding pH of the stomach, of the gastric surface. हमें याद रखना होगा कि इन्फेक्शन बाय H. pylori it eventually causes some of the problems, some of the diseases of our GIT. The one is it can result in gastritis. It can result in, as we already discussed, peptic ulcer disease. It can even result in gastric malt lymphoma or even gastric cancer. अब हमें पता होना चाहिए कि H. pylori, even though it is not completely clear कि कैसे अल्सरेशन करता है, how it causes ulceration of the duodenum or gastric mucosa, but हमें at least पता होना चाहिए the theory behind how H. pylori causes the disease, peptic ulcer disease. or there is a complex of interplay between are bacterial factors as well as host factors. देखिए हमें सबको पता है when there is an infectious disease present in our body, यार वायरल होगा या इन्फेक्शियस होगा, पैरासिटिक होगा,
दे हैव, इन ऑर्डर टू उनको ये डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, व्हेन दे हैव टू प्रोड्यूस द डिजीज, अगर उनको डिजीज प्रोड्यूस करना है, इफ दे हैव टू प्रोड्यूस डिजीज, उनको फर्स्ट स्टेप होता है, दे हैव टू दे हैव टू अवॉइड होस्ट डिफेंसेस। जो बॉडी के होस्ट डिफेंसेस है, लाइक इम्यून सिस्टम है हमारा, होस्ट डिफेंस सिस्टम है, उसको अवॉइड करना होता है, देन दे कैन establish a disease, they can cause a disease. First they have to avoid host defenses. और जो ये एच पाइलोरी है, it is able to facilitate gastric residence, which can cause mucosal injury, and it also avoids the host defense. बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि दे कैन cause, they can produce different these virulence factors. For example, they can the virulence factors include, if we virulence factors released by H pylori, कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर इज गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेस, ये एक वायरलनेस फैक्टर है, और देयर इज आल्सो साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए विच इज़ नोन एज कैग ए ऑल्सो, ये एक वायरलनेस फैक्टर है, और इवन वैक्यूलेटिंग टॉक्सिन also known as WAC-A. These are these are some of the virulence factors which are present, which are produced by different strains of Helicobacter pylori. और भी बहुत सारे होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेंस फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इवन पैम्प्स, अगर हम याद रखने के लिए, जो आपको पता होगा पैम्प्स क्या होते हैं, दे आर पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, और इवन देयर इज आल्सो लिपोपॉलीसैकेराइड्स एज वेल। और ये जो सारे स्ट्रेन्स होते हैं, दीज वायरल फैक्टर विच आर सेक्रेटेड बाय, विच आर रिलीज बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, they together can cause mucosal damage through different mechanisms. They can cause mucosal damage through different mechanisms. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले, हाउ दे कैन कॉज म्यूकोसल डैमेज, देखिए फॉर एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल इज दैट दे हैव द एबिलिटी दे हैव द एबिलिटी टू टारगेट, उनके पास एक खूबी होती है, एबिलिटी होती है टू टारगेट द होस्ट इम्यून सेल्स। फॉर एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले एक वायरलनेस फैक्टर डिस्कस किया था, विच वॉज नोन एज वैके, वैक्यूलेटिंग, इट टारगेट्स CD4 टी सेल्स। ये वैक्यूलेटिंग ए जो वायरलनेस फैक्टर है, ये टारगेट करता है CD4 टी सेल्स के, और जिसकी वजह से व्हाट हैपन्स, जब ये इनको टारगेट करता है, देयर इज इट इनहिबिट्स द CD4 टी सेल्स, इनहिबिट्स देयर proliferation. This inhibits proliferation of these cells, and eventually जब इन्होंने inhibit किया their proliferation, and even in addition can disrupt normal function of B cells also, even CD8 T cells, macrophages, even mast cells. Now अब हमें पता चल गया that those virulence factors, for example VAC-A, it inhibits the proliferation of CD4 T cells. It even inhibits the proliferation, it even inhibits the disruption, cause the disruption of normal function of B cells, normal function of CD8 T cells, macrophages, and even mast cells. और even ये भी स्टडी ये भी बताती है कि that जो ये H pylori है from a different type of virulence factor like CAG A जो हमने डिस्कस किया था, from the CAG A dependent, it can cause direct inhibition of parietal cell hydrogen potassium
ATPase activity. देखिए, through a KAG dependent, it can directly inhibit the parietal cell hydrogen potassium ATPase channel or ATPase activity. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें जो पता होना चाहिए, यूरिएस, जो कि हमने इससे पहले बताया था कि क्या करता है, व्हाट यूरिएस डू। हमने डिस्कस किया था कि यूरिएस जो एंजाइम होता है, इट प्रोड्यूसेस एमोनिया। यूरिया से ये प्रोड्यूस करता है एमोनिया, जिसकी वजह से देयर इज एन अल्कलाइन, इट टर्न्स एसिडिक पीएच इनटू अल्कलाइन पीएच। दैट्स व्हाई दिस यूरियस हेल्प्स बैक्टीरिया, जब ये प्रोड्यूस करते हैं, दे हैव द पावर, उनके पास एक हथियार होता है जो कि इस यूरियस की शक्ल में होता है। और ये यूरियस उनका हथियार क्यों होता है, इट अल्कलाइज, जो हमने बताया था, इट अल्कलाइज द पीएच ऑफ द स्टोमक। और जिसकी वजह से व्हेन देयर इज एन अल्कलाइजेशन ऑफ द पीएच, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया, to reside in the acidic stomach. That's an important point to know, because it generates NH3 which can even damage epithelial cells. हमने यूरियस के बारे में डिस्कस किया, व्हाट यूरियस हैपन्स, it helps bacteria to reside in the acidic stomach because it produces ammonia, जो हमने डिस्कस किया, it produces ammonia, NH3 is known as ammonia, ये प्रोड्यूस करता है ammonia, that's why it results in the alkalinization of the pH, which helps bacteria to reside in the acidic stomach. And even this ammonia, when this is released, it can damage epithelial cells as well. देखिए, एक ही चीज़ से एक ये बैक्टीरिया, हाउ इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग destroyed in the acidic stomach, acidic surrounding, and eventually it also एक तो खुद को बचा रहा है, and eventually on the second part, it damage the epithelial cells of the gastric mucosa as well. इवन जो बैक्टीरिया होता है, द हेलिकोबैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी होता है, इट इवन प्रोड्यूस सरफेस फैक्टर्स। कौन से सरफेस फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, दैट आर कीमोटैक्टिक। और कीमोटैक्टिक वी नो क्या होते हैं वो कीमोटैक्टिक सरफेस फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स जो कीमोटैक्टिक होते हैं, जो ये फैक्टर्स रिलीज करते हैं, दोज आर कीमोटैक्टिक। लेकिन कीमोटैक्टिक किस सबस्टेंस के लिए होते हैं, फॉर न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, विच इवेंचुअली व्हेन दे जब भी वो इंक्रीज्ड कीमोटैक्टिक टू द न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू द कॉज द डैमेज टू same, which cause damage to the epithelium. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट देयर आर म्यूकोसल डिफेंसेस। देखिए, व्हेन देयर इज एन एसिड सेक्रीशन इन द स्टोमक, देखिए विदाउट ए म्यूकोसल डिफेंस, दैट एसिड जो होता है दैट कैन डैमेज, अगर वो बैरियर ना हो, अगर वो डिफेंस ना हो, एसिड कैन इवेंचुअली डैमेज आवर गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक एपिथेलियल लेयर। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोसल डिफेंसेस, जो कि हमने डिस्कस किए थे, दैट देयर आर प्रेजेंट म्यूकोसल लेयर, दैट देयर आर प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड लेयर, देयर इज प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन लिपिड लेयर, म्यूकोस जेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से म्यूकोसल एक फर्स्ट लाइन म्यूकोसल डिफेंस होता है फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट। बट जो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, but the Helicobacter pylori, it produces और makes, ये क्या बनाता है या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीएसिस रिलीज करता है, ये प्रोटीएसिस रिलीज करता है एंड फॉस्फोलिपेसिस। देखिए नाम से आपको पता चलेगा कितना इंटेलिजेंट बैक्टीरिया होता है ये। देखिए क्या किया इसने,
कितनी तैयारी के साथ होता है, आप समझिए कितनी तैयारी के साथ होता है, कितने हथियार होते हैं इसके पास। द वेपन्स, दिस बैक्टीरिया इज फुल ऑफ वेपन्स। देखिए, एक तो पिछले हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि क्या क्या करता है टू डिसरप्ट द म्यूकोसा इंटीग्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, टू डैमेज द इपिथेलियल लाइनिंग। बट हियर जो कि हमारी जो बॉडी के, हमारी जो जीआईटी के म्यूकोसल डिफेंसेस होते हैं, नेचुरल डिफेंसेस होते हैं, नेचुरल बैरियर्स होते हैं, उनके लिए भी इसके पास एक पर्टिकुलर वेपन होता है। व्हाट? इट प्रोड्यूसेस proteases, it makes proteases, it makes phospholipases. These are the enzymes, and eventually when they are produced, what they can cause, they break down glycoprotein lipid complex, mucus of the mucus gel, which reduce efficacy of mucosal defense system. That's another mechanism how they cause damage to the mucosal lining. Even जो बैक्टीरिया होता है, they release what they expresses, they release, they express additions on their surface. वो ये एक कम सब्सटेंस रिलीज करते हैं. व्हाट आर दिस एडिशंस? एडिशंस दे फैसिलिटेट अटैचमेंट. इसकी वजह से दे फैसिलिटेट अटैचमेंट टू गैस्ट्रिक इपिथेलियल सेल्स. सो अगर क्वेश्चन भी आए कि हाउ हेलिकोबैक्टर, हाउ एच पाइलोरी is attached to the gastric epithelial cells by a substance which is known as adhesions. It also depends on the host factors. वो कौन host factors जिन पे depend होता है? It includes duration, it can include localization of the H pylori in the GIT, even the inflammatory response from our body, and even it depends upon the genetics. It eventually also depends upon the genetics of the human, because there is a study shows that there may be presence the genetic predisposition to acquire H pylori bacteria. इम्प्लीमेटरी रेस्पॉन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इम्प्लीमेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है. देयर इज एन इंक्लूड द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल्स, जिसकी वजह से इट लूड्स द लोकल इंजरी बाई बाइंडिंग टू द मेजर MHC complex type 2 cells, which can lead to the cell death through apoptosis. These were the some important pointers regarding the H pylori induced पेप्टिक अल्सर डिजीज. और अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें अबाउट द सेकंड रिस्क फैक्टर विच इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज. और इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि NSAIDs यूजुअली हम जिनको कहते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं एनाल्जेसिक्स, या इनको हम कहते हैं पेन किलर्स. We should remember, we should notice that they represent the most commonly used medication in the world. These are the most commonly used medication in the world. देखिए, अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें हाउ दे इंड्यूस पेप्टिक अल्सर डिजीज, हाउ दे काज द डिस्ट्रप्शन ऑफ म्यूकोसल इंटीग्रिटी. देखिए, अगर हम इसकी प्रोसेस देखें, मैकेनिज्म देखें, वी शुड रिमेंबर जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, हमें याद रखना चाहिए. दे आर द इम्पॉर्टेंट, दे प्ले द क्रिटिकल रोल इन मेंटेन. ये जो प्रोस्टाग्लैंड्स होते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे आर क्रिटिकल इन मेंटेनिंग gastroduodenal
mucosal integrity. They are very important in maintaining the gastroduodenal mucosal integrity, and also it is repair. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखिए, ये सेंटेंस पढ़ के, ये सेंटेंस जान के आपको एक आइडिया आया होगा कि हाउ जो ये drugs होते हैं, how they can disrupt the mucosal integrity, because these prostaglandins are very very important in maintaining the mucosal integrity of our gastroduodenal system. But due to the use of these drugs which are COX inhibitors, जो कि COX inhibitors होते हैं। COX क्या होता है? These are the known as cyclooxygenase inhibitors. बट साइक्लोऑक्सीजनेस क्या होता है? व्हाट साइक्लोऑक्सीजनेस इज? एक्चुअली में साइक्लोऑक्सीजनेस होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ prostanoids, which includes also prostaglandins. जो ये साइक्लोऑक्सीजनेस होता है या कॉक्स होते हैं, एंजाइम होता है, कॉक्स एंजाइम होता है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है, इन्हीं की वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जब इनकी वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच इवेंचुअली इज द क्रिटिकल विच प्ले क्रिटिकल रोल इन द मेंटेनिंग द गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसल इंटीग्रिटी, जब अब हमने यही इनहिबिट कर दिया, इसका पाथ भी इनहिबिट कर दिया, बिकॉज व्हेन वी यूज कॉक्स इनहिबिटर्स एज विच आर प्रेजेंट इन which the mechanism of action of these drugs, and when we inhibit this enzyme which was producing prostaglandins, it can disrupt mucosal integrity as well, because it is inhibiting the enzyme which is responsible for the production of prostaglandins, and that prostaglandin which is responsible for maintaining the mucosal integrity of gastroduodenal system. आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आ रही होगी कि कैसे ये चीज़ इफेक्ट करती है our mucosal integrity of our gastroduodenal system. Even besides these two important risk factors, non-steroidal anti-inflammatory drugs and Helicobacter pylori, there are certain वहाँ कुछ certain diets भी है which play a role in the certain diets also play a role in peptic diseases. For example, certain foods and beverages can cause dyspepsia as well. Even some chronic disorders have also been said to be associated with PUD, which includes advanced age, जिसमें आता है the second one chronic pulmonary disease, even chronic renal failure, cirrhosis, nephrolithiasis, even alpha-1 antitrypsin deficiency, even there have also been said possible association with the disease like hyperparathyroidism, coronary heart disease, polycythemia vera, chronic pancreatitis, or alcohol use also, even obesity, even there are other infections as well besides H. pylori infection. Other infections which can be associated with ulcer disease can be cytomegalovirus, there can be herpes simplex virus, there can be Helicobacter helminthi, not pylori. Even other drugs
besides NSAIDs, कौन कौन से होते हैं वो? दे कैन बी bisphosphonates, they can be chemotherapy, even anticoagulants like clopidogrel, even sometimes glucocorticoids like potassium chloride. Some other miscellaneous causes can be infiltrating diseases, radiation therapy, Crohn's disease, etc. So these were some other causes besides the two main important risk factors, which is Helicobacter pylori and non-steroidal anti-inflammatory drugs. So this was about the main pathogenesis of the peptic ulcer disease. और now अब हम पढ़ेंगे कि what is the clinical presentation. अगर हमारे पास patient आता है with the peptic ulcer disease, how he will present before us. So clinical features में क्या होता है? One of them is abdominal pain. Patient can come with abdominal pain. A very important, एक बहुत ही important clinical feature होता है. There is an epigastric pain. Patient will complain of epigastric pain, which will be burning in nature, burning or gnawing in nature. It will be a discomfort, a burning discomfort, epigastric pain. और एक वेरी टिपिकल पेन duodenal अल्सर में एक टिपिकल पेन आता है. उसमें क्या आता है? पेन ऑकर्स 90 मिनट to 3 hour after meal. This is typical for duodenal ulcers. Even there can be present nausea, weight loss, are commonly more commonly for gastric ulcers, but can be present in duodenal ulcers as well. Even dyspepsia can also be present in the peptic ulcer disease patient. Even sometimes there can be pain which is worsened by eating. Sometimes there can be bleeding and the patient, जब bleeding होगी patient को तो नहीं पता होगा bleeding हो रही है, but the patient will come with black stools, tarry stools, black stools. अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें इसके बाद when we do a physical examination of the patient, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट में हम क्या फाइंड करते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट फाइंडिंग क्या होती है जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू फाइंड करते हैं? इट इज एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस. इट्स एन एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस. इवन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वी कैन फाइंड tachycardia or orthostasis, hypotension. एक्स्ट्रा. ये तो था हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन. और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस देखें जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस है, व्हाट आर द मेन कॉम्प्लिकेशंस? फॉर एग्जांपल, one of the main complications it is gastrointestinal bleeding syndromes. Another complication is perforation. The ulcers can cause perforation of our gastrointestinal tract. It can cause gastric outlet obstruction.
These are some of the main important complications of पेप्टिक अल्सर डिजीज। और अगर हम डायग्नोसिस में देखें, बिसाइड्स जो हमारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, बिसाइड्स दैट वी हैव रेडियोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक्स एंड उसमें से सबसे मोस्ट सेंसिटिव जो होता है इसमें, मोस्ट सेंसिटिव शुड रिमेंबर, मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन फॉर पर्टिकुलरली फॉर अपर जीआई, वो क्या होती है? इट इज एंडोस्कोपी। और पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी फर्स्ट लाइन यूजुअली एंडोस्कोपी होती है। इवन वी कैन डू biopsy, particularly in especially in gastric ulcers, as they have a high chance of malignancy. Even sometimes occasionally we can use barium study. And nowadays rapid, you should remember this, rapid urease test is done. रैपिड यूरेज टेस्ट भी होता है आजकल। वो क्या होता है? इट डिटेक्ट्स यूरेज, जो हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू द विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दिस आर द मेन इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटीज़ जो कि हम प्रेफर करते हैं इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज। इवन वी कैन डू कल्चर एज वेल। Stool antigen can also be done, even urea breath test. These are some of the methods to detect the peptic ulcer disease, to detect for the detection of particularly Helicobacter pylori. और अगर हम अभी ब्रीफली ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें, मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ present are the first line antacids, which can include proton pump inhibitor and H2 receptor antagonists. We can use mucosal protective agents, जिसमें क्या क्या आते हैं, like sucralfate, prostaglandin analog, bismuth containing compounds. ये तो particularly था for Helicobacter pylori, but what if NSAID induced, उनके लिए भी main product है to stop the acid secretion. We have the first line will be to discontinue the drug, yeah, and then induce proton pump inhibitor or H2 receptor antagonist. या अगर we have to continue the drug, we have to use PPI on regular intervals. PPI हमें anyhow use करना पड़ेगा. We can use prophylactic therapy like misoprostol, PPI, or selective COX-2 inhibitor. और आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना होगा, besides the treatment, preventive treatment, there is an important recommendation, there is an important medication, important treatment for H. pylori, as it is an bacteria. The treatment is combination, antibiotic combination therapy. ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है। एंटीबायोटिक एक कम्बिनेशन में आता है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली
in market में they are present as kits, or usually there are different types of combinations present, like clarithromycin, amoxicillin, metronidazole, etc. Different tetracycline, even there are present tetracyclines, uh, nitroimidazole. There are different types of combination of these present antibiotics, and their particularly the duration for the therapy is 14 days. Usually commonly done is 14 days or 10 to 14 days. So this was all about the peptic ulcer disease. It is pathophysiology, management, risk factors, complications, and diagnosis, as well as it is treatment. I hope कि ये वीडियो भी आपको यूजफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो. Thank you very much for watching this video. God bless you.